कैमरा पे फिर से कह रहा हूँ, जो रेस्टोरेंट वाला अपनी किचन दिखाने से शर्माए, घबराए, डरे, उस रेस्टोरेंट में खाना मत खाओ। एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं सलमान खान की भी नहीं सुनता। मीठा भी अच्छा लगता है, तीखा भी अच्छा लगता है, नमकीन भी अच्छा लगता है, खट्टा भी अच्छा लगता है। संजीव, ऐसा कोई क्विजीन है जो आपका नहीं बनाना आता है? बहुत सारे। तो लोकल, सीजनल, फ्रेश इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। आप मुझे पैसे दो कि क्या गलत है तब बताऊंगा। लक्ष्मी तभी घर आएगी, दरवाजा तो खोलना पड़ेगा। अरे मेरी कॉपी जैसे भी चुरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जैसे खाने में मैं गलतियां नहीं निकालता, जिंदगी में गलतियां निकालने की क्या जरूरत है? खूबियां निकालता। He wanted me to eat it. So he put that, and suddenly there was something moving. It was a big red ant. अरे, And then he said, it's a parting gift, it's an orange flavored ant. So I tried it. It was. This Diwali, light up your celebrations with Reliance Digital's Festival of Electronics. Enjoy GST reduced prices and get up to 20,000 instant discount on leading bank cards. Avail extended warranty, expert guidance, easy EMI and much more. Shop online or visit your nearest Reliance Digital store today. Terms and conditions apply. Sanjeev, welcome to Unscripted, my podcast. I'm beginning with you. Wow, thank you. What an honor, Mark. Thank you very much, Sanjeev. And before we start, wish you all the best. May this be the best content that has ever been created. My wishes for you. Thank you so much. Sanjeev, we go back 30 years. 30 years ago, you were already famous. You were already popular when I first got to know you. What were you before that? Okay. I think we go back about 32 years. 32 years. 32 years, or maybe 32, 33 years. Yeah. That's before that I was still Sanjeev Kapoor. I haven't changed. It's the person Sanjeev Kapoor is still the same. What it was has always been the same. When I met you, I was a chef professionally. Before that, also I was a chef for about 8 years, and of course before that I studied to become a chef. Before that, normal person, normal kid who was studying, didn't know what would happen to his career, and was just kind of playing along. You were an executive chef when I got to know you, and you were just 27. I think that is the youngest executive chef any hotel has seen. No, actually, the rules now have changed, I must say. At that time, it was pretty. I would say I was lucky. I was happy that at a young age I'd become executive chef for a large hotel, and in some sense that is what I wanted, because that was the decision I made on my first day that I was in the kitchen, and I wanted to make sure that I reach the top of my profession much faster than others. Than anybody else. Yeah, and then there was, I didn't know whether it will happen, but till that time, whatever I had done, I was able to do well. So there was no reason for me not to believe that. And so the normal rule was that if you were very good, you will become executive chef. If you have worked in the industry for about 20 years, by 40 you could become. And I had set the target as 10 years. And to me, it was pure mathematics. I said that if everyone takes 20 years, they work 8 hours, I'll work 16 hours, and that's it. So it's... and you're still working 16 hours. I don't work. I just wake up and sleep. I wake up and sleep. Is this work? No, this is not work, Mark. This is not work. So I haven't worked a single day in my life.
They say if you enjoy your job, you don't work a single day. That is true. But my question to you was at 27, you were the executive chef of Centaur Hotel Juhu Beach. And after that, you never worked in any hotel chain. That's right. So is it that you felt you had kind of peaked your career at 27 and you didn't want to work beyond that in the same category? Or is it also that at that point of time there were no big hotel chains? You know, it was just Taj and Oberoi. And I understand you were not very happy with Taj and the Oberoi for some reason. No. It's not that I was not happy when we, in our college days, I did not appear for Taj interview because at that time, back then, there was a disparity between our college and which is Pusa Hotel Management Institute and the Mumbai one, and the way the students were treated, the Delhi students were not treated at par with the Mumbai students. So in protest, I did not, and it was just my protest. It was to myself. I get that. And I did appear for Oberoi's. I got selected. But Flight Kitchen? No, it was not Flight Kitchen. Huh. It was their management training program. But the day I went to the training center, they mentioned that we could be posted there. And I said, no. I didn't go back. So it was not, I haven't had, there's nothing that I don't like them or I didn't like them. It was not like that. It was just that I thought that professionally, if I have to move up, then it has to be, so ITDC it was. But if at that stage in your career, any of the big hotel chains that are there today, like Hyatt or Marriott or Four Seasons or Radisson, had any of these been there around at that time, would you have considered moving to any of them as executive chef? So I did consider when I came to Mumbai after about 1.5 years. So Taj Bengal. Taj Group of Hotels, their chef Chef Satish Arora, he asked me, he says, what are you doing at Centaur? Why don't you join us? And I said, if you give me a large hotel, if it is a big city, and I want, if the computers were really not there, so if there is systems and processes where computerization is there or going to happen, then I'll. So the option that was available was Taj Bengal, and I was selected, but I did not join. As I normally say, better sense prevailed, and then nothing to the hotel that I was joining. I had just started the TV show. Yeah. And I didn't know where it would take me. Were there at that point in your life when Zee TV came forward and you gave them the name Khana Khazana? Was there any kind of insecurity, internal doubt, because you were giving up a steady executive chef's job to take up a career in television at that point of, not a career, but it was something different. Was there any kind of? No, it was fun. It was not, because I was not giving up my job. It was just, it was flirtatious. It was just doing one episode, right? It was not, so it was fun. And in any case, in my mind, it was there that I have reached top of my career. Now what, right? This is how I'll spend the rest of my life, from maybe one hotel to the other to bigger or whatever. So there was discomfort. So, and this was not seen as a career back then. It was just appearing on TV for one episode, and that was huge. To be at that point of time. At that time, oh, that was huge. So it was fun. It was not that I was going to take up a career, or it was just I just did it. That it would become, it would in some sense change my life. I don't think anyone knew. I don't think that was the plan. I don't think
I knew, director knew, producer knew, ZTV knew. Nobody knew that. Nobody knew that. So, so there was no insecurity Nothing like at that. all. No, Okay. not at all. You also said, I read somewhere that if you can cook well, if you can teach well, if you can speak well and smile well, the show is done. Has that carried you forward? Yeah, so my point was that when I started TV, and I realized that I was not the only one who was doing that one episode. Different chefs were invited, and they were doing it, and nobody knew what is to be done. No one has nobody knew. Fortunately for me at that time, because I was little dissatisfied with myself that what will happen to my future in that sense. Okay. So, and I always felt that, or my father actually felt that I had not studied enough. So I You was, did a management course. yeah, so I joined a management course. I did not finish it because I had become too busy with my TV shows by then. So I did go through everything, written exam, group discussion, debate, interview, everything at Narsi Munji Institute of Management Studies for Masters in Marketing Management. So I did attend some classes, and there You were the oldest student, I think. I was. I was. And it was something which I started to learn things which I had not learned. I was studying books on marketing, on management, and there were a few things that so basic things, but when you are taught the difference between sales and marketing, that what is consumer, whatever you are doing, how important is consumer. So so then I started to ask myself that, oh, this TV show, who's the consumer, who's the user, who's the viewer, and what is it that they want, Okay. right? In that context, I realized that it was a show which, in some sense, will people watch, what would they do with it? Would they watch to enjoy? I don't think the format was like that. It was instructional. So if it was instructions, that means we are teaching. Yeah. So if you are a good teacher, if you could teach, if you could speak, because you have to understand that a teacher, if the subject matter, the way it is taught, if you cannot communicate that, then the teaching is Wasted. wasted. And if you have to hold the viewer, right? If you can make them, there's some empathy that can be there, and smile brings that. Smile, it becomes, it adds to that. So I understood. In some sense, I cracked the code, and I used to share this with everyone, Okay. because I felt that I have, in some sense, even today, whatever little I know of whatever I know, I try and share that. Share it with people. Yeah. That's intuitive. That's not something that I say that I should keep it to myself. I'll share that. It's up to people to take it or leave it. It's what I feel is right. This is your first episode. So there were mics that were in front of us. We took them out, and that was a suggestion, and you agreed to it. Absolutely. But I don't want to keep the burden in my mind that I knew that And you there's a didn't better tell way me. to do it. And I think, so I'll just share my thought. I'll not just keep it to myself. No, it's not. No. Some people sometimes don't like it, but that's okay. I don't change. What are the habits, the routines and beliefs that have brought you so far? I think all the, I call it as the value system. The value system, which is the upbringing, which is in your younger years, who you are, what has shaped you.
And that's all the learning what happens at home, Okay. which my case, my parents, our family, whatever the way you initial years, the way you have spent, that I think in my case has helped me a lot. So doing everything right, which means that whether it is hard work, whether it is discipline, whether it is sincerity, whether it is compassion, whether it's honesty, whatever, everything. All those small, boring things which, They make the big picture. I think that is the most important thing. Rest, everything is your skill set, but to get to that skill set, you have to apply all these things. Yeah. Whatever you do, it's a combination of these things. If you are doing any business and you are in a venture, it's a partnership, and you always, how it happens at home, what you see is that your family is always, nobody is selfish in families. So if you look at it, mother is always making sure that the family is eating first, giving. So there's a giving nature. Yeah. Right? That is what family teaches you, and that's what kids also then do that, They and learn they would not do anything to upset that apple cart. So in business also, if you start to do that, that when you are, whether you are employing people, whether you are doing a joint venture with someone, if you make sure that their interest is put ahead of your interest, Your interest. it'll be everlasting relationship. You don't have to worry. It's not something. If you're only thinking of yourself, then it's not. It may not last that long. So most actually all my relationships, whether it's my family, my work, my business. So ZTV Khana Khazana, 19 years non-stop. I did that. Currently, I do menus for Singapore Airlines. 20th year this is, right? My publisher from first book to now, it's the same, Popular Prakashan, right? 30 years, right? Or anything, you name it. I don't, you can call it loyalty or you can call it stupidity, but I think these things are important. So if you build long-term relationships and you are sincere in whatever you do, I think there is no way that you will not do well. You will not. Tell me, you've always had, I know, this fierce determination within you and the willingness to be different, Right. to go down roads that people have not stepped on before. So, how much of your success has got to do that, or would you also say people talk about destiny and people talk about luck? Right. So, where does destiny and luck feature in your life? See, the way I look at destiny and luck is, see, if you have to look at opportunity, I think opportunity comes to everyone. Opportunity knocks, right? Now, when the opportunity knocks, were you there to open that door or not? Or you were there but you did not open the door, right? So destiny and luck is opening of that door when opportunity knocks. Okay. So if you open the door, the chances are, as they say, Lakshmi tabhi ghar aayegi, darwaza to kholna padega. Right? That's true. Yeah. So I think it's the determination, fearlessness also comes from something which is most people don't do that or they doubt, is because they have fear of failure. If you cross that path and you say that what is fear of failure? What is failure? I think at core, there's nothing called failure.
Sanjeev, what was your this is it moment early in your career? I am still waiting for it. You're still waiting for it. I don't know what it means, Mark. I don't know that what is that moment, because to me each moment is important. So I have always felt that the moment that I am in, it's the best moment, and I don't think of anything else. So to me, this is the moment, and I've never been able to understand or think, and I've never felt. To me, and this is genuine. People say, "How can that be?" I said, "Really, this is it. This is it. This is because did I know where I am today? Did you ever imagine? But it could be that I'm nowhere today. You don't know where I would be tomorrow, right? So it is. I've felt like this forever. Forever. So there's nothing that, oh my God, I have achieved. Every day I feel that, oh my God, this is better than yesterday. And it has stayed like this all my life. But there's never been a moment like when I were to ask you, what changed when everything changed in your life? Nothing has changed. Nothing has changed. How many years have you known me? 33, 34 you said? Right? So what has changed? You're in stratosphere now. Has it changed me? No, it's not changed you. That You're is it. still the same guy. So if that means that what people think, those are probably material things. It's where you live, how you live. But I eat like the same way, I sleep the same way, I interact the same way. Everything is same. It has not changed. It's not changed. I think it's the perception which people change. To me, it's the same. So, I knew Mark Manuel, I can call him my friend, and that was the case 30 years ago also, even today also. Get me somebody who says that, oh, when we were younger, I knew him and he has changed. Then I will feel that, oh, there is something. Yeah. Okay, I get that. So, there's yes, in some sense, the reach of TV show. I think that is something which took me to homes of millions. So my familiarity, that increased. Yeah. When that increases, that the way people react to you, that changes. That changes, yeah. That changes. But I don't expect that change from you. I don't expect that change from my parents, not from my brother, not from... At times, they also tend to change. Not that mine tend to change. So at times, my sister may say, oh, I didn't call, I thought you may be busy. I said, why would you think that? Even if I'm busy, you just call, if I don't pick up, I'll call back. Yeah, I get that. So it's not that I have changed. I know, I get that. There was a time, Sanjeev, when the chefs were only called out of the kitchen if the food was bad. You know? But I think you changed all that. And I don't think it would be wrong to say that you kind of glamorized the profession. Even hotel management was meant for those who didn't get admission in other places. But you've changed that. And today, again, I would not be wrong in saying that, like Amitabh Bachchan, Sachin Tendulkar, you're one of the most recognized Indian faces in the world. You agree to that? Questionable, but yes, to some. Yes, it is true. It is true. It is true. It is true. But I think that's bound to happen. And
it takes effort. It does not happen just like that. Hmm. There's method to that. So after I understood that what TV has done, I understood the role of mass media, the reach of mass media. That's when I understood that internet is going to be important. So I think at the time when we met, at the time internet was just starting, but my website was up and running. और Sanjeev Kapoor. संजीव, आपका वेबसाइट तभी चालू था, हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी वेबसाइट नहीं था उस वक्त, बराबर? you're right. So I understood that you have to create reach. So that mediums of reach become important. That's why I launched my own TV channel. That medium of reach. Importance of audio as medium of reach. So I was in US. तो वहाँ पे एक दिन हम कुछ events वगैरह के लिए गए हुए थे. I had a car to my disposal, and the person who was driving me around, he didn't seem very literate. American guy. So what he was doing was that he was talking to his phone for directions. So Google Map, he was doing, and this is many years ago in India, we were not using voice for anything. Even now, our use of voice is less. Yes. So he was using that. And I said, oh my God, this is something which is going to be big, right? So we started working on content in audio. So we worked on content for smart speakers, Alexa, Amazon Alexa. So we created, so we became their 1P partner, which means that if you ask Alexa, give me a recipe of this, the chances are it's powered by us. Right? So, so I have understood that, okay, you have to, if you're looking at creating an impact, how do you do that? So, for example, I think in some sense, all the names that you took, all four, I think lack one thing. While we may be very well recognized, but I think our primary medium of communication has not been the way world communicates, which is in English. Okay. So, whether it's Mr. Bachchan, whether it is Sachin Tendulkar, whether it is, so while maybe most recognized, but if we were doing whatever we were doing and our primary medium of communication was English, our recognition would be much higher. Much higher. You would say that, yeah? 100%. Because then your reach is definitely, you are being seen, heard by more people. I think this was It's like this podcast. अगर इसी को हम हिंदी में करना शुरू कर दें यहाँ पे, तो आपकी रीच बढ़ जाएगी. क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है हिंदी में. नहीं, हिंदी की कंजम्पशन हमारे यहाँ पर ज़्यादा है कंट्री में. हमारे ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा है. So it is, even if you get small percentage of viewership of that, it will be more than what you would get. It's like news channels. हमारे यहाँ कंट्री में जितने news channel, I run a TV channel, right? So I have data for that. तो जो news channel की viewership है, right? उसमें कितनी viewership है? और हिंदी news channel की viewership में बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है. But not always it's the numbers, it's also the impact. So you दोनों चीज़ों को मिलाते हैं, impact भी करते हैं, reach भी create करते हैं. So I think इसको दोनों में कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में कर सकते हैं. English. Sanjeev, a gift from Reliance Digital. Oh, thank you very much. Reliance Digital's Festival of Electronics is here. Okay. And you can get up to 20,000 rupees instant discount on leading bank cards with GST reduced prices. Wow. Easy EMIs, extended warranty, free home delivery and instant installation. Wow. This is the Muhurat of the festive season. क्या बात है, क्या बात है. Sanjeev, tell me what happens when you go to a restaurant. Oh, what happens? What happens? Food gets delayed. Seriously, मेरी शक्ल देख के ना बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों को
कि ओहो अब इनके लिए, मतलब नहीं, नॉट दैट दे वांट टू डू वेल, तो सारी चीज़ें 2 बार चेक होती हैं, then but that's bound to happen. I think that's a good thing. I enjoy food. One, I eat everything. There's nothing that I don't eat. मैं सब कुछ खाता हूँ और मैं I don't find fault in food. Or if you find, you don't tell them. No, I just don't find. You don't find. I don't. Okay. So the way I have trained my mind is that it'll take a lot more effort to find fault than to find what is good. तो इसमें अच्छा क्या है वो मुझे पहले नजर आएगा, और जो ठीक नहीं है उसके लिए मुझे एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा. That has been my training with life, not just food, right? क्या अच्छा है मुझे वो ज्यादा जल्दी दिखता है. Okay. Now if that is the case, अभी फूड में तो one rule I've made, I'll only find fault in food if I'm paid to do that. Okay. आप मुझे पैसे दो कि क्या गलत है तब बताऊंगा. नहीं तो बाकी तो सब बहुत अच्छा है. So contest that I judge, all of that. पैसे दो मैं बताता हूँ. नहीं तो क्या नहीं बताऊंगा. Has it been possible for the family and you to ever go out for a meal and have a quiet dinner without a lot of ताम जाम ceremony? शेफ आया, मैनेजर आके बैठ गया. वो नहीं हो सकता. नहीं हो ही नहीं सकता. अभी क्या होता है, पहले होता था इंडिया के बाहर हो जाता था. अब सभी जगह साउथ एशियन जो है वो सब जगह, एंड तो बहुत रेयर होता है. बट ओके, doesn't bother you. संदीप, आप काफ़ी कुछ चीज़ कर रहे हैं. you're a businessman now, a very successful business. आप entrepreneur भी है. TV shows, food shows, brand ambassador, restaurant, food products, kitchen appliances, ये सब कर रहे हो आप. कुकिंग के लिए टाइम मिलता है आपको? इसमें सब में कुकिंग ही तो है. नहीं, मैंने पहले जैसे आप करते थे. देखो पहले भी क्या होता है, कुकिंग जब आप प्रोफेशनली करते हो तो जो 16 घंटे किचन में रहने वाला काम है, जैसे जैसे आप और काम करते जाते हो, जैसे शेफ में आप होटल में हो, रेस्टोरेंट में हो, देयर मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू मैनेज. उसमें आपको HR भी करना है, उसमें कॉस्ट भी देखनी है, उसमें क्वालिटी भी देखनी है, वेंडर्स भी देखने हैं, क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स भी देखने हैं, सब कुछ देखना है. बिकॉज आप यू आर नॉट अ शेफ एज अ हॉबी, इट्स अ प्रोफेशन एंड इट्स बिजनेस. तो आपको पैसे भी बनाने हैं, किसी के लिए भी आप काम कर रहे हो. सो दैट हैज बीन द केस. सो नाउ आई डू इट. Like yesterday we had dinner at home, so I would cook. Kal lunch hai, I would cook. You'll cook? Yeah, 100%. That is something which I do. We छुट्टियों पे जाते हैं, मैं खाना बनाता हूँ. I was in London with my daughter and we made sure. तो हम लोग क्या करते हैं कि होटल की जगह कुछ ऐसे अपार्टमेंट वगैरह हायर करते हैं. हाँ. So that we have fun. You have fun there. Yeah. वैसे भी घर में कौन खाना बनाता है? You are in a family of women. Yes. I read recently your mom's birthday. Yes. And you talked about her feeding you and you know Yes. what you learned from her. तो आपके मम्मी है, your wife Alyona, who I know and I like very much, 2 बेटी है. तो ऐसा कभी मौका मिलता है आपको कि No, my mother-in-law is also there. mother-in-law also. You're in a family of women. Yes. तो ऐसा कभी आपको किचन में एंट्री करने देते हैं कि नहीं लोग? मिलता है. मिलता कोई है. ऐसा नहीं है कि मैं किचन में एंट्री का, बट सब लोग खाना बना लेते हैं तो इसलिए टेंशन नहीं होती है कि कौन किसने खाना बनाना है, किसने नहीं बनाना है. हाँ. किसका मूड है. अभी जैसे कल घर पे लंच के लिए कुछ लोग हैं, तो ऑलरेडी सुबह बैठ के हमने चाय पे आलियोना, अच्छा ये बनाए, अरे नहीं वो डैरन माय सन इन लॉ, ही विल आल्सो बी देयर, वो ही इज एलर्जिक टू राइस. तो हम सोच रहे थे बिरयानी नहीं, फिर बिरयानी नहीं बनाते, इसको ये करते हैं, ये करेंगे. तो वी ऑलरेडी डन दैट.
इट्स फन, इट्स नॉट ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अगर आपको गाना आता है तो गाना कहाँ कोई भी हो। प्रेशर थोड़ी है आपको, इट्स नॉट, अगेन दैट्स नॉट वर्क फॉर यू, इट्स फन. दैट्स फन. संजीव, इंडिया के ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गए. पीपल हैव बिकम वेरी हेल्थ कॉन्शियस. अभी हम यहाँ खा रहे हैं, वी ईटिंग स्पा cuisine in Sante. राइट. ओके, तो लॉट ऑफ पीपल आर इनटू ग्लूटेन फूड. अभी ये चैलेंज हो गया फूड इंडस्ट्री को, मगजमारी है क्या? इज इट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर योर? देयर इज फर्दर ग्रोथ, यू कैन डू अ लॉट मोर. सो अभी व्हाट यू आर सेइंग कि हेल्थ फूड से अभी उसकी बातें ज़्यादा होती है, कंजम्पशन उतनी नहीं है. हाँ. सो देयर इज मोर टॉक देन कंजम्पशन. अभी भी इट्स टेस्ट फर्स्ट, इट्स नॉट हेल्थ फर्स्ट. ओके. Right, so it is so that's the opportunity because it will be health first. So there's a big runway. अभी we are in taste first, right? तो अभी टाइम लगेगा, बातें होनी शुरू होंगी, which is a good thing. So, good thing. और ये जो कि gluten free, intolerances, lactose free, all this is bound to happen. It's like हर चीज में क्या होता है, आपको ऑप्शंस मिलनी चाहिए होती है. इन इवॉल्व्ड इकोनॉमी हर चीज में ऑप्शन मिलती हैं आपको. करेक्ट. शर्ट विद बटन डाउन, ऐसे वाला, 2 वाला, इधर वाला, वैसे डिजाइन वाला. नहीं तो पहले कैसे होता था कि अच्छा दर्जी के पास में शर्ट, कौन सा कपड़ा है, कुछ हो गया, ये भी नहीं पूछना कैसे सिलेगा. राइट. ओके. नाई के पास बैठे, उसने बाल काट दिए, ये नहीं आपने अभी तो बताएगा, दिखाएगा कैसे कटवाना है सर, कैसे इधर से. सो व्हेन आई वेंट टू न्यूजीलैंड टू वर्क व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो वहाँ जाके मुझे समझ आया कि एक कि बाल कटवाने हैं तो पैसे तो कम थे, तो बोला कि वो वहाँ से कटवाना वो $5 में काटता है. अच्छा. हमारे रेस्टोरेंट के पास में एक था, वहाँ बोर्ड पे लगा था $40, $40. मैंने कहा ये 5 और 40 इतना फर्क क्यों है. राइट. बोला वो हेयर ड्रेसर है ना. तो मैंने कहा ये क्या है. हजाम है. नहीं वो $5 वाला है. नहीं, $40 $40 वाला हेयर ड्रेसर है. है. मैंने कहा वो कौन है. वो बार्बर है. अच्छा. सो बार्बर परसेप्शन. नो. सो फर्क क्या था. फर्क ये था कि वो जो बार्बर था वो 5 मिनट में बहुत अच्छे बाल काटता था. हाँ. $5, बट वो मशीन से, बट इट वाज वेरी गुड, वेरी स्किल्ड. जो $40 वाला था उसमें जाओगे, वो शैम्पू भी पहले करेगा, फिर काटेगा, 3 कैंची को घुमाएगा, ऐसा करेगा, वो करेगा, ऑल दैट. राइट. सो इन एनी इवॉल्व्ड इकोनॉमी ये चौंचले बढ़ जाते हैं. या. राइट. एंड दैट्स इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ बिगर अपॉर्चुनिटी. राइट. इन अ कंजम्पशन सोसाइटी, राइट, दिस वर्क्स. सो इसमें और सबकी मार्केट होती है, सबकी मार्केट है, यू चूज. एंड ये वाली जो होती है प्रीमियम होती है. देखो $5 वो, राइट, 5 and 40. सो देयर इज अ बिग डिफरेंस. सो लाइक हर चीज़ के अंदर आपको ये अभी ये थोड़ा सा मूंग के साथ में अवोकाडो, राइट. अवोकाडो एक $180 $200 का मिलता है अवोकाडो. आपने ट्राई किया? मैंने ट्राई किया. मैं वो लेता हूँ. ये रिसोटो. ये है रिसोटो बाजरे का. राइट. संजीव, 90s में भी आप गैजेट्स के गुरु थे. हाँ. यू वेरी टेक savvy. यस. तो how much has technology invaded the kitchen? I think इंडिया में अभी भी अर्ली डेज. हम लोग कोशिश करते हैं बिकॉज मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक इट. सो थ्रू आवर कंपनी वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू इनोवेट, ट्राइंग टू डू न्यू थिंग्स. सो थ्रू वंडर शेफ we have a machine which is so first IoT enabled machine in India was launched by us. Ahead of time, but that's okay. अभी भी हमने एक शेफ मैजिक करके लॉन्च की है, where it's a machine which can weigh, chop, cut, cook, bake. Introduced. Yeah, it's in the market. Market में. Yeah. इंडिया के बाहर भी बेचते हैं, इंडिया में भी है. It's expensive, but it's a very good machine. And recipes are fed in.
तो आपको कुछ नहीं करना है. इट्स एन एक्सपेंसिव मशीन, कुछ आई थिंक 50,000 की मशीन है, बट it's something which is doing very well for us. ऐसे ही हमारी कॉफ़ी मशीन्स हैं बहुत अच्छी, फुली ऑटोमेटिक. हमारे पास कुछ 15 कॉफ़ी मशीन्स हैं, वेरी गुड, फुली ऑटोमेटिक. यू जस्ट प्रेस ऑफ बटन, यू कैन डू कैपुचिनो, यू कैन डू सब तरह की कॉफ़ी उसमें है. Then we have something called NutriPot. It's an electric pressure cooker, you can say. Right, great machine to have. So technology, मतलब मैं जो अपने घर में मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं अपने फ़ोन से काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ. ओके, या बैठे बैठे? हाँ जी. अच्छा. So मतलब मैं यहाँ से अपने क्या रेफ्रिजरेटर का, रेफ्रिजरेटर, एसी, अलार्म्स, ये चीज़ मतलब नहीं, किचन में की बता रहा हूँ. हाँ, तो किचन रेफ्रिजरेटर जो है, तो मैं अपना फ्रीज़र, फ्रिज, उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकता हूँ. अपना कॉफ़ी मशीन में यहाँ से चालू कर सकता हूँ. हाँ, वो बाय द टाइम यू रीच होम कॉफ़ी तैयार है. हाँ, मतलब वो, लेकिन वो कप वप रखना पड़ेगा, वो पहले से ऐसा नहीं है. बट बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ मैं. टेक्नोलॉजी आएगी, कहाँ जाएगी हमें, मतलब वी वांट टू, आई थिंक वी विल एंड वी आर विल बिकम स्लेव्स ऑफ टेक्नोलॉजी. सो एंड आप कुछ चाहो या ना चाहो, तो उसमें से क्या अच्छा आपको यूज़ करना है, क्या नहीं करना है, आपके ऊपर है. हाँ, आपके ऊपर है. जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया अभी. राइट. बट is that a good thing or a bad thing? How is it making a difference to the food industry? I think it's a good thing. It's a good thing. So we started working on it. उस समय artificial intelligence नहीं बोलते थे हम. क्योंकि that was not the word that was used. क्या बोलते थे तभी? तो हम लोग प्रोग्रामिंग ही होती थे. All this is programming. तो हम लोग मतलब NLP और मशीन लर्निंग, ऐसी चीज़ें बोलते थे. सो वी वर्कड ऑन दैट एक्चुअली. हमने किचन में हमने पूरा उसमें मशीन लर्निंग पे काम किया है, जो स्मार्ट स्पीकर्स के लिए गया. सो बैक एंड पे सारा वही सब कुछ. हाउ इट इज़ गुड इज़ कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए आसान हो जाती हैं. विच इज़ कि अगर मुझे ये सब चीज़ें मेरे पास यहाँ पे हैं और मुझे ये पसंद आ गई, मुझे अच्छा, लेकिन इसमें से ये पसंद आया, उसमें से वो पसंद आया, उसकी सॉस पसंद आई, उसका ये पसंद आया, एंड आई कैप्चर्ड दैट. लेट्स से मैंने फ़ोटोग्राफ ले ली, कुछ ऐसे किया, और उसके बाद मैंने कहा कि ये मुझे पसंद आ रहा है. नाउ इन दिस स्फीयर मुझे और क्या क्या पसंद आएगा. राइट. आई विल कम टू नो लाइक दिस. ओके. सो देयर बट यस, आपको कैसे यूज़ करना है, किस तरह से आपको सवाल क्या पूछने हैं, अभी दैट इज इम्पोर्टेंट. या अभी भी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं. हाँ. आप यूज़ करते हो? नहीं, इतना नहीं. देखो, ये मेरे फ़ोन है, ये होम स्क्रीन है. इस होम स्क्रीन में ये 6 जो हैं, ये सारे द मोस्ट पॉपुलर AI, राइट. ये परप्लेक्सिटी है, ये कोपायलट है, ये ग्रॉक है, ये मेटा AI है, ये जेमिनाई है, और ये चैट GPT है. ये मैं 6 रेगुलरली यूज़ करता हूँ. ये सारे के सारे मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ. आज सुबह भी यूज़ किए होंगे मैंने. बिकॉज अगर आपको कुछ लर्निंग चाहिए तो बहुत बहुत जल्दी आप बहुत फास्ट पकड़ सकते हैं एप्लीकेशन. मतलब जो हमने अभी अपना ऑफिस रेनोवेट किया, यू हैड कम, राइट. सो मेरा जो रूम है जहाँ मैं बैठता हूँ, अब वहाँ पे मुझे कि कौन सा ये मेरा रूम का साइज़ है, ये मेरा इधर ये स्क्रीन मुझे चाहिए, इसमें कौन सा कैमरा जिससे मेरा पीछे अगर बहुत ज़्यादा लाइट है और मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है जिसमें साउंड ऐसे आएगी और इस बजट की मुझे चाहिए. दिस इज़ द प्रॉम्प्ट आई गेव. बताया ये रूम है, ऐसे है, ये है, दीज आर 5. उसके बाद पूछता है कि डू यू वांट मी टू टेक यू टू द वेंडर्स हु विल गिव दैट.
and it took उनको ऑप्शंस तो चलते ही रहते हैं ना, छोड़ने को तैयार नहीं होते वो। no, so it took me less than 5 minutes तो ज़्यादा बोल दिया मैंने। नहीं तो मैं इसके लिए ये पूरा करने के लिए किसी को बोलता, बताते, मुझे ये करते, मैंने कुछ नहीं, मैंने बोला कि मैं कहा ये वाला जो है ना, ये 2 ऑप्शंस हैं, वो अच्छा सर देख ली मैंने, हाँ मैंने कर लिया, हो गया मेरा, राइट। सो इट बिकम्स वेरी इजी एंड इट्स इन एवरीथिंग, सब चीज़ों में हो जाएगा कि ये ओके, ये सोनी का ये वाला कैमरा है, फिर ये तो मुझे अच्छे से पता है कैमरा है कि कौन सा लेंस यूज़ हो रहा है, कौन सा हो रहा है, ओके 3 लेंस है, ये मास्टर है, ये 2 ये मेरे ऊपर, ये कैमरा आपके ऊपर है, ये लाइट इधर से आई है, ये ऊपर से बाउंस कर रहे हैं, ये ऊपर से लाइट है, राइट। नाउ इसके बारे में मुझे कुछ और पता करना है, ये तो मुझे पता ही है, बट इसके साथ में मुझे कुछ है तो मैं डेटा पॉइंट्स जैसी मैं बात करूँगा, पूछूंगा, अब मेरा इंटरेस्ट पता शुरू हो गया उनको, राइट। तो आगे से मेरे से कॉन्वर्सेशन भी वैसी शुरू होगी, ऑन अनदर लेवल। तो टेक्नोलॉजी इज फन। आपने ऑफिस की बात की, हाँ, आई सॉ इन योर ऑफिस हाँ, एक कोने में ये ड्रम सेट था, हाँ, और एक दूसरे कॉर्नर में वो हारमोनियम था, पेटी था। पेटी था, ऑर्गन है, गिटार है। आप सभी बजाते हो? नहीं, मैं ड्रम्स बजाता हूँ, मैं अब सोच रहा हूँ कि कीबोर्ड वगैरह सीखूंगा मैं अभी थोड़ा सा। लेकिन ये क्यों? बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, क्या इट्स अ स्ट्रेस बस्टर वो? नहीं, हाँ, आई बीन इंटरेस्टेड इन म्यूजिक बहुत सालों से, मुझे मज़ा आता है। मेरे जितने सिंगर हैं, बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो हम लोग जितने सिंगर्स जैम सेशंस होते हैं आपका? हाँ, होते हैं, रेगुलरली होते हैं। एक्चुअली हमने आज प्लान किया था, लेकिन हमारे ऑफिस में कुछ काम चल रहा है तो आज नहीं फिर। संजीव, आपने कुछ 200 के ऊपर कुकरी बुक्स लिखी है, एंड यू हैव इंट्रोड्यूस्ड अ होल लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, किचन प्रोडक्ट्स, नॉट टू मेंशन स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट किचन वेयर। तो आपने इंडियन हाउसवाइफ के रोल और लाइफ काफ़ी आसान कर दिया है। Is that I think right? अभी बहुत आसान हो सकता है, अभी और आसान, बहुत आसान हो सकता है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ करने को है अभी, बहुत सारी चीज़ें। यू हैव कम अ लॉन्ग वे संजीव। जब मैं आपको पहले जाना, यू यूज्ड टू कम टू द होटल वो इन सुजुकी मोटरसाइकिल पे, याद है? बिल्कुल। और फिर उसके बाद में फिएट कार, और फिर मारुति 800 कार, लाल रंग, सेकंड हैंड, हाँ? लाल रंग वाली, लाल रंग वाली, हाँ, करेक्ट। वी हैव ट्रैवल्ड इन दैट कार, so you have come a long way. तभी I remember you said that you want a decent car, मुझे एक decent car चाहिए, you don't have a house of your own, खुद के घर चाहिए, decent car चाहिए। Those were your immediate desires or aspirations or what, I think so. You've come a long way from there, real long way. What do you feel about your growth? You must be feeling, I know everybody else is supremely, I am very happy, I am very proud of you, but at some level when you're sitting down there by yourself at night, do you think about, okay, I used to do this and now I am here? Like for instance, when you pass Centaur Hotel, आपको दुख होता है देखने के लिए कि अभी होटल नहीं है, वहाँ पे लोधा का अपार्टमेंट्स आ रहा है, आपने 30 साल पहले वहाँ पे काम किया। लाइफ को ओवर इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करता मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मेरा फोकस ये है, दैट्स इट। मैं इतना ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में टाइम नहीं लगाता कि ऐसा होता तो वैसा होता, ये होगा वो ऐसा होता, वो मेरे पास कभी भी टाइम नहीं था मेरे पास। So I've always been busy with things that excite me. Excite you, enthuse you. हाँ, तो अभी कभी ऐसा होगा कि टाइम मुझे मिलेगा तो तब शायद ऐसे मैं सोचूं कि अरे ये था, वैसा था, ऐसा था। Nostalgia is good. Nostalgia is fun. As long it motivates you. As long it is something which brings you to life with that. So yeah, you don't just want to go down a road like that, a back ऐसे road. मतलब वो मतलब कुछ, नहीं उसमें कुछ। हाँ, उसमें कुछ नहीं कि just for that is, I don't know that feeling yet. Okay. So I'm not saying it's right or wrong. I don't want to be judgmental, but I don't know that. I don't know it. So मुझे, because ऐसा नहीं, okay,
आई हैव नोन यू, हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, इतने हमने पैसे कभी सोचे भी नहीं थे, हम दोनों ने साथ में किया था साइन, नहीं हुआ, राइट? कुछ Then फर्क think पड़ा? about it. कुछ नहीं फर्क पड़ा। मतलब आप उस वक्त सोचो कि इतने हजारों डॉलर्स की बात हो रही थी, राइट? जब मतलब मेरी सैलरी तो 10,000 रुपये महीने की थी, राइट? तो उस समय मतलब पता नहीं कितने कितने हजार डॉलर्स की बात हो रही थी उस प्रोजेक्ट के लिए, और नहीं हुआ। मुझे उसमें बुरा ये नहीं लगा कि वो प्रोजेक्ट हमने नहीं किया, वो प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं। और उसका कारण क्या था, वो वॉज वेरी सैड कि जो फोटोग्राफर और वो जो थे, आई नो गुंटर एंड पूरा गुंटर बेयर एंड पीटर क्या था वो आर्ट। सो एनीवे, वॉज बिकॉज ऑफ हमारे यहाँ के जो हालात थे, कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स में गए जो याद है आपको? मुझे अच्छे से याद है। मतलब वो एक रेस्टोरेंट में जाने, एक रेस्टोरेंट की किचन देख के एक इंसान 3 साल तक बीमार हो सकता है देख के, और वो प्रोजेक्ट इसलिए नहीं हुआ, लेकिन उसका दुख है मुझे। एक बात है, हाँ, कि अभी भी इंडियन रेस्टोरेंट्स ऐसे है। हाँ, वो रेस्टोरेंट याद है, हम किचन में गए थे, हाँ, इतना बड़ा मार्क, दैट इज, मतलब आप सोचो कि तो वो उसका दुख होता है मुझे। आई अंडरस्टैंड, बट लेट मी टेल यू, मैं हमेशा कहता हूँ, और आज से नहीं बहुत सालों से कहता हूँ, कैमरा पे फिर से कह रहा हूँ, जो रेस्टोरेंट वाला अपनी किचन दिखाने से शर्माए, घबराए, डरे, उस रेस्टोरेंट में खाना मत खाओ। Because absolutely, I think we as Indians, we need to work on the hygiene much more. Hygiene is paramount. Yeah. बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ किचन में, बाहर, सड़कों में, सब कुछ। We I think as a society, our civic sense zero. हमें बहुत अच्छी करनी है, and it's a behavioral change. But behavioral change में क्या होता है कि marginally better होते जाना चाहिए, but our pace of that change is too slow. Very slow, ना? Too slow. I know हमने स्वच्छ भारत की बातें की यार, talking, many people have been talking, but people at large, I think, और ये पहले कहते नहीं बहुत गरीब देश है, but I think ये गरीबों से ज़्यादा अमीरों की प्रॉब्लम है। Yeah. True. वो चेंज करना चाहिए। आपने हाइजीन के बारे में बात की अभी, फूड का। व्हाट अबाउट प्रेजेंटेशन? आजकल प्रेजेंटेशन के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस हो गया है। आई नो, यू नो, जो तो मैं देख रहा था, मेरी जो फर्स्ट डिश थी, हाँ, शाम सवेरा, जो मैंने टीवी में Yes, पहली बनाई, yes. राइट? सो वो कुछ ऐसे से ही मैंने, मुझे तब क्या होता था, पालक का कोफ्ता होता था, हाँ, पालक का कोफ्ता पालक ग्रेवी में सर्व होता था। हाँ, क्या बोरिंग है। सो बिकॉज वी हैड टू शूट फॉर अ मैगजीन, कुछ इंडिपेंडेंस डे का था, तो मैंने ऐसा ग्रीन, अपना केसरी कलर और वाइट, ऐसे कुछ उसकी शाम सवेरा वैसे बनाया था, तो टीवी पे भी वो आ गया एंड बिकेम वेरी फेमस। वेरी फेमस। एक्चुअली अभी मैं, कल मुझे किसी ने भेजा, हाँ, कुछ अभी एक इंडियन एयरफोर्स कुछ डे हुआ, अभी 2-3 दिन हाँ, पहले हुए, उसमें कुछ एयरफोर्स, हाँ सर, उसका उसमें कुछ मेन्यू कुछ बना, कुछ ऑपरेशन सिंदूर के वैसा वाला, पूरा राइट? पाकिस्तानी, राइट? यस। उसमें एक डिश है ऐसा कुछ करके शाम सवेरा, तो काफ़ी लोगों ने मुझे, अरे तुम्हारे डिश में कहा चलो अच्छा है कि शाम सवेरा को इतना क्रेडिट मिल रहा है। तो वी ऑलवेज बिलीव कि फूड जब भी है, इट्स अ सेंसोरियल थिंग, राइट? आई वांट टू इंटरप्ट हियर बिकॉज Yeah. यू मेंशन दिस एयरफोर्स हाँ. डे, और उनका जो मेन्यू है, हाँ, दे आर नॉट द क्रिएटर्स ऑफ दैट। ये आपने चालू किया था सेंटोर में इंडिपेंडेंस डे पे, याद है आपको? मुझे अच्छे से पूरा मेन्यू जो था, हर एक डिश यू हैड गिवन अ पेट्रियोटिक नेम, ये नहीं कि Correct. पाकिस्तान का नाम Right, था, right, इट वाज एन इंडियन थिंग। Yeah, यू हैड डन दिस, आई रिमेंबर, इन द 90s, है ना? See that क्या डिवाइसेस आपके होते हैं, इसी तरह के डिवाइस आप क्रिएट करते हो। सो क्रिएटिव माइंड क्या करता है, ऐसे ही करता है। अभी मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे अभी मुझे किसी ने, मेरे एक दोस्त जो मेरे साथ में इतने सालों से मुझे जानते हैं, बट
उन्हें ये नहीं पता था कि शाम सवेरा वाज इन्वेंटेड क्रिएटेड बाय मी। तो वो एक किसी रेस्टोरेंट में गए मुंबई में ही, मैं बोला अरे कल हम एक रेस्टोरेंट गए, इतना बढ़िया खाना, और अरे एक डिश तो इतनी अच्छी थी और वो आपको ट्राई करनी चाहिए। और देन ही स्टार्टेड टू डिस्क्राइब दैट एंड आई एम लुकिंग एट हिम एंड स्माइलिंग। एंड देन फिर मैंने कहा अच्छा उस डिश का नाम शाम सवेरा था। हाँ वही। सो हेमंत इज ने, आई सेड हेमंत कितने सालों से मुझे जानते, तुम्हें ये नहीं पता कि? तो नहीं भाई मुझे नहीं पता। फिर मैंने अपनी पहली बुक मंगवाई, मैंने कहा ये देखो ये कितने साल, अरे बताओ मुझे ना, नो वंडर। सो वो जैसे अभी आजकल ऐसे गोलगप्पे शॉर्ट क्लासेस के अंदर मिलते हैं। सो मेरा मेन्यू 1989 में मैंने जो न्यूजीलैंड में अपने रेस्टोरेंट में गया था उसके अंदर हम। तो इट इज़ समथिंग व्हेन यू क्रिएट, लोग कहते हैं अरे पेटेंट आपने क्यों नहीं करा है? मैंने कहा जितना यूज़ करेंगे लोग उतना अच्छा है, उतना अच्छा। आपने कभी ये किया नहीं? क्या? You don't want to patent something or No, I name dishes after you. I can, but that's not, see, what is your, हम जब पैदा हुए बहुत सारी चीज़ें हमें मिली और हमें फ्री में मिली थी, राइट? किसी ने तो उस पर काम किया था, एंड वी टुक दैट फॉर ग्रांटेड। आई थिंक वी वुड हैव बीन अपसेट अगर उसके कोई हमारे से पैसे मांग रहा हो, कि हमने खाया, कि हमने रोटी खाई, चपाती खाई, उबले हुए चावल खाए, कहीं तो किसी ने तो बनाया हो, राइट? तो दुनिया ऐसे ही चलती है। वट एवर योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज, लेट इट बी देयर फॉर एवरीवन टू यूज। यू कांट से कि नहीं आपको यूज़ करने के लिए, मैं बहुत चीज़ों के लिए हम पैसे लेते हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ों में तो नहीं करना चाहिए। दैट इज़ योर प्रोफेशन, दैट इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन। सो दैट्स व्हाई आई से मैं जो सीखता हूँ मैं, You share it. You teach it. I teach immediately. I share, I teach immediately. Are you conscious of time and age? Not just where. Now I'm not talking work. I'm talking about your personal life. हाँ. Okay. As you grow older, your eating habits change. Your lifestyle changes. You're more into health. You're more into fitness, meditation. Right. Are you on that kind of road? You definitely you become more mindful. So अभी जैसे यहाँ आने से पहले, अभी कल भी और पिछले 2 दिन से कुछ एक्सरसाइज वगैरह कुछ ऐसे हुआ नहीं था, पर अभी यहाँ से पहले मेरे को हो आज भी अगर रह जाएगा तो बहुत गड़बड़ है। तो मैंने देखा, मैंने कहा करीब आधा घंटा तो निकल सकता है, तो मैंने आधा घंटा कार्डियो किया and then I left. So yes, and also पता तो आपको हमेशा होता है, Yeah. आपकी प्रायोरिटी क्या होती है। हाँ. So प्रायोरिटी में ये समझ आते आते कि हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, बट हेल्थ ना वो लग्जरी भी है। शुरू में ये समझ आने के लिए वो हर चीज़ के लिए टाइम देना पड़ता है। टाइम कब अफोर्ड कर सकते हो? अब टाइम की बात कर रहा है, इज इट मुझे किसी ने बताया कि संजीव कपूर लिव्स आउट ऑफ अ सूटकेस। हर 2 दिन एक फ्लाइट पकड़ के कहीं ना कहीं जाता है। ये सच बात है? या इट इज़ ट्रू। सो इसलिए अभी हमने एक सूटकेस की कंपनी लॉन्च कर दी है। तो ऑन एवरेज महीने में कितने फ्लाइट्स लेते हैं आप? ऐसे गिनता नहीं एक्चुअली कुछ फरवरी में कोई एक दिन था, आई डोंट नो कौन सा दिन। सो माय डॉटर टोल्ड मी, डू यू रियलाइज दैट टुमारो इट विल बी योर 30th फ्लाइट ऑफ दिस मंथ। फरवरी में एंड इट वाज नॉट एंड ऑफ फेब, इट वाज नॉट एंड ऑफ फेब, ऐसा आई डोंट नो। सो होता है, दैट्स इट। बट यू एंजॉय दैट, यू एंजॉय ट्रैवलिंग। हाँ, मतलब मुझे ऐसा स्ट्रेस नहीं होता कि ओ माय गॉड ऐसा है। एक्चुअली मुझे ऐसे किसी चीज़ से नहीं होता। लोग मुझे कहते हैं ओह इतना ट्रैफिक है, इतना वो है। तो कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं जो टाउन में रहते हैं, मैं घर पे मेरे आना है उनका, तो अरे कहाँ वहाँ से जूता, कितना ट्रैफिक हो गया, क्या ये वो। आप ऐसे सोचते नहीं? तो मैंने फिर एक दिन ना बोला उस दोस्त को जिसने ऐसा बोला, मैंने कहा ऐसा है कि हैव यू रियलाइज कि मैं आई हैव बीन डूइंग दिस कमिंग टू योर हाउस, हैव यू एवर सीन मी कंप्लेन एट सेम प्लेस, राइट? Either you come to my place or whether
It's same This road is we it. are taking. Right? Hmm. Have I ever? I say, yeah, I never thought about it. Right? So it's how you see life. Again, जैसे खाने में मैं गलतियां नहीं निकालता, जिंदगी में भी गलतियां निकालने की क्या जरूरत है? खूबियां निकालो. Sanjeev, I want to talk about your legacy. You've got so much. You've done so much. आपने इतना कमाया, नाम कमाया, अपनी इंडस्ट्री को वापस काफ़ी चीज़ दिया है. What is it you would like to be remembered for, and what would it you'd like to leave behind? Mark, I don't think like that. मैं ऐसे नहीं सोचता कि मैं नहीं हूँ तो क्या होना चाहिए. This is what I should be remembered for. I don't think like that. I've never thought about it. You don't. So, to me, what is more important is that what am I doing today? Is it what I want to do? Because I know whatever I would do, that would be the right thing to Right do thing. on that day. So because context changes, it may become wrong after some time. But was it right at that time? Was it something that I wanted to do at that time? As long as I do that, that is what matters. Nothing else matters to me. It's not that, oh my God, let me not do this because this is not how I want to be remembered. No, I don't. There are many things that I do. People say, why are you doing this? What? Why? Why are you seeing that person? Why are you meeting this person? Why are you doing this? So you're saying if you're in a situation at any given time, it's because you want to be there. Because I want to be there. So when I started to become famous, I remember, मोटरसाइकिल में नहीं आप हो सकते, आपको कार नई होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए, आप जिस घर में रहते हैं वो ऐसा होना चाहिए. Why are you meeting that person? He's not your level. Really? So I have not only ignored, I have only listened to my heart. And Not other people's egos. That does not bother me. I don't, if that is the right thing to do, and if everyone else also is saying this is not, don't do this. And there are many politically incorrect things that I say, I do. But if there is something that I want to do, so recent, I will not tell you what it was. So I was called for a meeting. Very important. Very, very important. Institution, right? But they only gave me 48 hours. But there was a friend's son's wedding. Not very close friend, but I had committed. So I chose to go to that friend's son's wedding. Even Alyona, my wife, she said, would they not be upset? I said, yeah, maybe. But it's wrong. How can they take me for granted? One. Two, this is important. You thought They more. they think that this is not important. But I think, no, I will do this. Now, I guarantee 99%, I think 100% people will say what I did was wrong because who I said no to, I should not have. You should not have. I should not have. And it is not from arrogance. It is that I felt that no, this is the right thing to do. So I just did it. Consequences, I don't know. You So- thought it was more important to make somebody happy. No, it was more about my commitment. Your commitment there. So if I have committed, that commitment is more important. I hate to say it, but it was like it's like एक बार मैंने जो commitment कर ली. तो फिर मैं सलमान खान के भी नहीं सुनता. No, that's a famous dialogue. Very from his film, famous. right? What a dialogue! What a iconic dialogue he's created. Amazing. Okay. You must be getting a lot of young chefs coming to you advice के लिए Sure. कि
they're looking at you today. आप कहाँ पहुँच गए? How big you are? You know, like I said, आप stratosphere में है इस वक्त. You're really on top of the world. Without, I don't know how many of them even consider कि your formative years, your years of struggle. So when they come to you for advice, आप क्या बोलते हैं उनको? Depends क्या पूछ रहे हैं मुझसे. हाँ. So सर सेलिब्रिटी शेफ कैसे बने? ऐसे कुछ सेलिब्रिटी शेफ होता ही नहीं है, पहली बात. There's nothing like, सर अब आप हो गए तो आप ऐसा बोल रहे हो. ऐसा नहीं होता है. कोई सेलिब्रिटी शेफ कुछ नहीं होता. So I told them, I said, create body of work that is worth celebrating. Okay. If you can create that body of work which the world can celebrate, then you have the right to be called celebrity chef. Otherwise, you can't become celebrity chef. You can't become, yeah. You cannot. See, unfortunately, the word celebrity is misused. Yeah. It's not something that because you are seen, you become a celebrity. I think it's especially from profession point of view, from body of work point of view. I think in that profession, okay, what do you what have you contributed? I think that's critical. That's more important. I'm going to be asking you questions that, you know, people who see you, people who don't know you, would like to have these answers. Like, आपकी favorite food क्या है? My favorite food. बहुत सारी चीज़ें. एक चीज़ तो हो नहीं सकती. सुबह सुबह उठूँगा तो सुबह सुबह अच्छी चाय, जैसी चाय मुझे चाहिए वो मुझे अच्छी लगेगी. उस समय पानी पूरी खिलाओ तो अच्छी नहीं लगेगी. वो पानी पूरी भी मेरी फेवरेट है. चॉकलेट भी मेरी फेवरेट है. रसमलाई भी मेरी फेवरेट है. आई एम इंडियन एट हार्ट, राइट? सो दे आर फेमिलियर फ्लेवर्स. सो मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं जहाँ पर होता हूँ वहाँ का. अगर आज मैं इस रेस्टोरेंट में हूँ तो मैं कहूँगा कि सांते का खाना मुझे अच्छा लगता है. कल मैं ताज होटल के किसी रेस्टोरेंट में हूँ, मे बी हाउस ऑफ मिंग में हूँ, तो मैं हाउस ऑफ मिंग का खाना. अगर मैं घर पे हूँ तो मेरे घर का खाना मुझे अच्छा लगता है. मैं आपके घर में हूँ तो आपके घर का खाना अच्छा लगता है. इट्स नॉट कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं कहाँ हूँ वहाँ का लोकल खाना अच्छा लगता है, वहाँ का फ्रेश खाना. So local, seasonal, fresh is my first priority. तो वो तो चेंज होता रहता है. So it is not कि मैंने कह दिया मुझे अच्छा लगता है तो हमेशा ही वही अच्छा लगा, ऐसा नहीं है. Okay. So I have a large range. Okay. Large range. मीठा भी अच्छा लगता है, तीखा भी अच्छा लगता है, नमकीन भी अच्छा लगता है, खट्टा भी अच्छा लगता है. You've covered everything. Yeah. See, the point is all the taste buds actually, है ना? So people think कि in isolation ऐसा होता है या सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है. इसलिए उस वक़्त क्या अच्छा था. अब सीज़न में आम बढ़िया मुझे मिले तो अल्फांसो बहुत अच्छे. I love that. Now I go to Peru and you give me Alfonso and you say अरे आपने बोला था आपका फेवरेट है. नहीं है फेवरेट. See, it's the context. Most people think ये तो आपका फेवरेट है, आप खा नहीं रहे हो. अरे नहीं, अभी फेवरेट नहीं है मेरा ये. Get it. So that's how, because I'm asked this question, आपका फेवरेट खाना क्या है? Cannot be one. But वो जवाब देने के लिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास. तो एक चीज़ बोलूँगा, इतना लंबा आंसर नहीं देना पड़ेगा. बोल, फिर आ जाएगा लिखा हुआ, ओ संजीव कपूर को पानी पूरी बड़ी अच्छी लगती है. ओके, वेरी गुड, चलो नेक्स्ट. But this is the honest truth. Okay. संजीव, ऐसा कोई क्विजीन है जो आपका नहीं बनाना आता है? बहुत सारे जो मुझे पता नहीं है. मैं जहाँ नहीं गया, जहाँ मुझे नॉलेज नहीं है वहाँ के खाने की, तो मुझे कैसे आएगा वो जब तक आई लर्न दैट. बहुत से ऐसे राग होते हैं, बड़े बड़े सिंगर्स नहीं, आपको पता तो होना चाहिए, फेमिलियर तो होना चाहिए आपको, राइट? Yes, as compared to other people, you can master them quickly if you know the basics. Okay. तो मतलब ये नहीं है कि अब ये पिस्ता और कॉफ़ी का है तो इसके अंदर अच्छा एक लेयर उसका है, इसके साथ में बेसिक है. ओके, ये चॉकलेट है, इसमें क्या है, वो गनाश बनाया हुआ है, वो अलग अलग जगह में इसमें कोकोनट लगा दिया, उसमें वो है, ये सॉयल कैसे बना है, ईजी है. बट इफ देयर इज समथिंग दैट आई डोंट नो, लाइक we were filming many years ago in at that time that was world's #1 restaurant, right?
Noma. So I was filming with chef Rene Redzepi. It was a big series that we were filming for CNN. And we became good friends. I was there for a few days. And as we were to leave, he brought out a small glass jar, and there was some soil like this at the bottom of that. And he opened that, took a little bit. I said, "Pata nahi kya ga raha hai?" And he said, "Aise haath," and he put that, and he says, "This is your favorite. This is parting gift for you, my friend. क्या था वो? Try." He wanted me to eat it. हाँ. So he put that, and suddenly there was something moving. It was a big red ant. अरे And then he said, "It's a parting gift, it's an orange flavored ant." So I tried it. It was. So do I know how to make orange flavored ant? Till I tasted it, then I got into it. So I'm a curious person. If I don't know something, I have a promise to myself, no matter what field it is, I would know. okay. So it is for anything. Anything. It's not only food. Could be technology, could be textile, could be camera, could be light, could be wax, could be anything. Anything. Tell me 3 things that are not negotiable in your day. 3 things that are not negotiable in my day. See, those would be routine items, right? So till it is true, waking up, it's not negotiable, right? Till it happens, I don't know, but till that time, it will remain non-negotiable. I think they will be all routine things. All routine. All routine things, right? There's Brushing no- your teeth, it will be non-negotiable. ऐसा नहीं कोई मंत्रा कि ये मुझे हर रोज ये करना ही है, इसके सिवा मैं नई रात में सोऊंगा. Nothing like that. तो बहुत बड़ा प्रेशर हो जाएगा. ये तो मतलब I can't. So you have to remember, most creative people are mavericks. So if they are bound by something like this, oh my God. The creativity gets Yeah. stifled. So between my wife and I, so Alyona is bound by routine. Okay. You are not. I'm not. I am not. I find it boring. I cannot do same thing over and over again. Okay. To me, it's very boring to do. I say, how can you do it? It's amazing. It's a in some sense that's discipline. That's discipline, yeah. That's discipline. But I'm not good at it. I would, a few things maybe I should. But चल रही है, उसके बिना भी life चल रही है. What's the best compliment you have ever received? Millions. Millions? Millions. ऐसा नहीं कि कोई एक हमेशा याद रहा. Oh my God, हर रोज इतने होते हैं. आपने अभी इतने जब से बैठे हैं कितने सारे दे दिए, and I'm feeling so good. So every day you get so many compliments, and each one you feel, wow, अच्छा, really? कितने लोगों को ऐसे कि आपने हमारी शादी बता दी, मेरी ज़िंदगी बचाई, आपने मेरा ऐसा कितने, it's not hundreds, it's hundreds of thousands. I've been a lucky person. I've been a very, very lucky person that the compliments that I get, that you said कि आपने glamorize इंडस्ट्री, हाँ, फूड इंडस्ट्री को ग्लैमराइज किया आपने. Most I would hear from the industry is कि आपने chefs को respect दिलवाई है इस country में. Yeah. And I think that's more But important I than said glamour. that कि पहले तो शेफ्स को बाहर बुलाते थे when the Correct. food was not good. That's right. You have given them that stature. हाँ, so that respect, वो बहुत सारे chefs, it happens wherever I go, they would come and touch my feet. It would happen on the streets. It will happen. वो याद है एक बार गए थे हम, राजस्थानी फूड, वो महाराज बाहर आके पगड़ी रखा था पीछे. वो ऐसे मतलब कितने so I was so ऐसे
लोग कॉपी करने की, पेटेंट की ऐसे बात करते हैं, राइट? सो आई रिमेंबर इट वाज अ बुक लॉन्च many years ago. This was in Pune at Crossword. And so, big event. The owner of Crossword was also there. And while we were there, he says, "Sir, there is one chef who's opened a restaurant in that mall where that shop was. So he said, on your way out, can you just meet him? He'll be very happy that you stepped in his restaurant." I said, "Well, I have to go out that way." So, okay, another 30 seconds. Yeah, sure. I said. When I went there, so that chef, he had a tray, and on that tray he had kept a menu. And as I came, he touched my feet and he said, "Sir, this restaurant, I have learned all my cooking from your recipes from shows. Oh, And now I've opened this restaurant, and this is the recipes, this is the menu I made from your recipes, sir. All your recipes, whatever the menu is made from your recipes, and that is what I am serving, and it's doing very well." that is a handsome compliment. Yeah. So the other way to see that is, अरे मेरी कॉपी रेसिपी चुरा रहा है, क्या कर रहा है ये? खुद ने क्या किया फिर? Right? But No. I blessed him. I said, "No, do well." Right. So every day, Good. every day. What's the best advice you've ever received? Best advice I've ever received. No? I think it would be from my father, who always believed in saying things the way they are. So it says कि किसी चीज़ से कभी किसी चीज़ से डरना मत. If you are right, don't fear. Good. So that fearlessness has, That's there, set in. Yeah, that You've has- imbibed that. yeah. So I have कि गलत नहीं किया ना तो क्यों डरना है? कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए. एक लास्ट सवाल है, आपके घर में सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है? आपकी बीवी हाँ. या योर डॉटर्स? यू गॉट 2 daughters. Who's the biggest critic? Who is the biggest critic? I think. And your mom is also. Yeah, mom is also. Mom तो बहुत kind होते हैं ना, मतलब they are. I think biggest critic, I would say my daughters. They would be. Yeah, they actually they are not afraid to tell you the truth. Yeah. They are not afraid to tell you the truth. बाकी सब लोग तो खुश करने में लगे हुए होते हैं और कई बार झूठ बोलने में लगे हुए होते हैं, तो वो उनको पता है कि सच जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लाइक आई से दिस, सच बोलो सुखी रहो. So I think they also know that. They know that. सच बोलो सुखी रहो. Sanjeev, thank you so much No, for thank being you. unscripted with me on this podcast. It's been great fun. Thank you very Thank much. Thank you. Really had so much fun. Great food and wish you all the best. Thank you, Sanjeev. And Truly appreciate this. And I'm confident that this would be one of the top shows of any kind. Thank you. Very Wish you all kind the of you. best. Thank you.